हाँ जी, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हमारे सामने है एक ड्रॉपर। अब ड्रॉपर सुनते ही तुम्हारे मन में भी तुम्हारे पेरेंट्स के मन में काफी नेगेटिव सी इमेज बने कि ड्रॉप कौन लेता है यार, ड्रॉप तो लूजर्स की चीज है। बट भाई ने ड्रॉप लेके एक साल तैयारी करके एसएससी बीएस फोड़ा, तसल्ली से उसमें एडमिशन लिया एंड अभी बीएमएस के सेकंड ईयर में। दैट्स ऑल गुड। तो आज इस पॉडकास्ट में तुम्हारे मन में जितनी भी कंफ्यूजन चलती है ड्रॉप को लेके, या जो भी डाउट्स है ड्रॉप को लेके, या तुम में से अभी भी अगर कोई ड्रॉप लेने कंसीडर कर रहा है कि यार मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, एंड इफ इट्स वर्थ इट, और अगर नहीं हुआ तो क्या, एंड पेरेंट्स को कैसे मनाऊं, एंड ऑल दोज थिंग्स, सारी चीजें आज हम भाई से डिस्कस करेंगे। आयुष भाई, आई विल हैंड इट ओवर टू यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली। Yeah, thanks a lot. So, hi guys, this is Ayush. I hail from a small district in Bihar, and I cleared my class 12th in the year 2020. I attempted DUJAT in that year as well, but I couldn't clear. So, I took a drop without any backup college and I cleared DUJAT 2021. So, right now, I'm in SSCBS BMS second year, and I had All India rank 4 in the OBC category as well. So, that's it about me. परफेक्ट भाई, परफेक्ट। देखो, अब मैं छोटा सा फॉर द कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि मैंने भी अपनी ट्वेल्थ 2020 में की, भाई ने 2020 में की। मेरा एडमिशन हुआ हंसराज कॉलेज में। इसको अपना अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं मिला जो ये सोचता था कि ये डिजर्व करता है, एंड इसने गैप ईयर लिया। दैट्स ऑल कूल। मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, ये सेकंड ईयर में है, एंड परफेक्ट। अभी के लिए भाई विल स्टार्ट विद कि तेरे मन में पहले क्या आइडिया था, व्हाट वाज द आइडियल टारगेट कॉलेज व्हिच यू वर एमिंग, और जो तुझे नहीं मिला। एसएससी बीएस या इसके अलावा कुछ और, कि चलो इससे एक दो नीचे मिला तो भी आई एडजस्ट, बट नहीं मिला, या क्या हुआ? एंड वो नहीं मिलने की वजह से किस फैक्टर पे तू ब्लेम डालता है? नॉट नेसेसरली कोई एक्सटर्नल फैक्टर, वो तो खुद भी हो सकता है, तेरी खुद की Yeah. तैयारी भी हो सकती है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। थोड़ा बैक स्टोरी दे। Yeah, so I would like to tell first of all, my class 12th has been little twisted. In class 11th, I had science and I used to prepare for JEE, but I actually Got it. failed at that. 1 year I prepared for it and I failed at it like miserably. Then I came back home, I explored other options. So I kind of had an aversion towards commerce. So I thought of switching my stream. Then I didn't know about DUJAT as well. Like उस टाइम पे कुछ नहीं पता था DUJAT होता है वगैरह वगैरह. I just used to know कि I'll do commerce and I'll take admission BCom or BBA in any normal college. But like boards होने के 2-3 months बाद पता चला कि DUJAT नाम की कोई चीज है. And fortunately उस साल COVID था. So the exam got delayed to September, and this was an opportunity. So I just prepared for this exam in 4-5 months. Yeah, I had confidence in other sections like reasoning, English, and GK. But the key reason was I never prepared well for maths. This was my Got mistake, it. I admit it. And this was one of the central reasons I couldn't clear. But still, I was getting, I think, Shivaji College. It's a tier 2 college of DU for the BMS course, right? So I was getting this college, and I had this chance that I could take that college as a backup. But there was one key thing जिसकी वजह से मैंने drop किया, and I decided to go for this college. That was the uniqueness of this particular college. Because if you compare this college with other colleges of DU in the BMS circuit, it's poles apart. It is Second भाई, thing it is, is. second thing is I was not satisfied because I knew I didn't prepare. Now it was really a big challenge to take a drop year, especially I am from Bihar. So the people there are very conservative about things like drop year or repeating year, getting a back, etc. They're very conservative and they look down on you if you take a drop year or if you just get a back in your college. So my parents used to say that कोई college ले लो, local college ले लो, यहाँ की university में ले लो, you will have a backup. I told them कि पापा मिल तो रहा है college already DU में, but वो नहीं मिल रहा जो चाहिए. My uncle said कि एडमिशन करवा लो बीटेक में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में. बीटेक इज बेटर 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 बेटर, हम्म। यू नो, बीटेक इज अ वेरी बिग हाइप इन आवर कंट्री. बट till that point as well, I was very mind that see I didn't prepare well, so I'll take a drop here. So the primary motivation was I was not getting any good college. I hadn't attempted other exams like NPAT, Christ University. I had only attempted DUJAT. Got So it. all that I was left with is 1 year, take a drop, and it was up to me to prepare and get into this college. कूल भाई, कूल, काफी सही। एंड जो तूने बताया कि जैसे बिहार में कॉन्जर्वेटिव सारा माइंडसेट है, एंड वो पेरेंट्स रिलेटिव्स Yeah. एंड ऑल वो नहीं एग्री कर रहे थे, तो व्हाट वाज द लाइक एंड पॉइंट जहां जाके तूने कन्विंस कर लिया कि मुझे ड्रॉप भी लेना है एंड मुझे कोई बैकअप कॉलेज भी नहीं रखना? लाइक तुम्हें अब तक पता लग गया होगा कि भाई ने कोई बैकअप कॉलेज साइड Yeah. बाय साइड नहीं रखा, एंड इतना डेडिकेटेडली घुस गए कि वी आर टेकिंग अ ड्रॉप, एंड मैं इस एक साल में वो लेके दिखाऊंगा जो मेरा एम है।
उसको चाहिए था ऐसा सीबीएस, उसके लिए पूरा साल तैयारी की एंड ही गॉट इट, बहुत अच्छी बात है। बट अगेन वो लास्ट एक होता है ना कि बहुत से बच्चों को मन में आता है कि हम अपने पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करें। अभी तुम जाके वीडियो दिखा सकते हो, बट भाई ने वो क्या Yeah. एक्सेलेमेंट दिया कि खुद पे वो भरोसा आ पाए। So I used to be a bright student in 10th. ओके। From the point of view of where I belonged from, I was a good student. In 11th, I took the wrong stream. So that kind of created my image that इसने गलत stream चुनी, इसके साथ बुरा हुआ. हाँ, now he's doing commerce because he likes it. So before taking a drop year, my parents, yes, they were very much doubtful कि तुम मत लो, backup college ले लो, admission ले लो. Um, but I just stick to what I wanted to do. मैंने जिद की कि मुझे करना है, ड्रॉप ईयर करना है. Then I told them the beneficial factor कि देखो पापा, जाना कहीं नहीं है, घर पे बैठ के प्रिपरेशन करनी है. अगर फालतू में कॉलेज ले लूंगा तो वो एंगेज करेगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उस कॉलेज का एग्जैक्टली। कुछ भी सही नहीं है जो मिल रहा है. So at the end they said कि देखो प्रिपरेशन करनी है करो, but I'm giving you the last chance. Like इसके बाद तुम बोलो कि तुम्हें स्ट्रीम चेंज करनी है, ड्रॉप लेनी है, ये वो, so it won't be allowed. For me it was very challenging because I was taking drop year without a backup college. My score was just around 180 or 200 in the last UJAT. ओके। So it was pretty much of a challenge. And इट वाज। yes, at the end they were convinced because I was very much sort of जिद्दी कि मुझे लेना है तो लेना है, मुझे यही करना है. So गॉट इट भाई। शुरू में होता था कि थोड़ा घर पे माहौल अजीब होता था कि हाँ इसने ड्रॉप लिया है, इसका पता नहीं क्या होगा. बट इवेंचुअली इट जस्ट बिकेम नॉर्मल कि हाँ तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हाँ सही है, क्लियर कर लोगे. यस आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ क्लियर, मतलब हो जाएगा, काइंड ऑफ कूल दिस भाई, टाइप. कूल कूल कूल, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड स्पेशली कि जब ऐसी चीज आती है ना, तो पेरेंट्स के सामने एक चीज बहुत अच्छी काम करती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कि एक लास्ट चांस। एंड वो इस कॉन्फिडेंस देते हैं कि चल अब तेरी मान रहे हैं, आगे से कुछ मत बोलियो, चाहे वो स्ट्रीम चेंज हो, चाहे वो ड्रॉप ईयर हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब जैसे एक लास्ट मौका, जैसे आपने बताया कि आपके पापा ने कहा कि बस दिस इज द लास्ट वन, अब इसके बाद मत बोलियो, मान रहे हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जिद के बाद, आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि तुम जिद पे ही अड़ जाओ, तुम्हें कोई बैकअप कॉल लेना हेल्दी लगता है तुम लो, तुम्हें ड्रॉप लेना भी तुम्हारा डिसीजन है एट द एंड। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा बुरा, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारा डिसीजन है। एंड आगे की 30 40 50 साल के फ्यूचर को बर्बाद करने से अच्छा है यहाँ 1 साल खुद को टाइम दो, ठीक है? जल्दबाजी मत मचाओ। अब जैसा कि भाई ने बताया कि इसको कौन सा कॉलेज मिला, शिवाजी कॉलेज, राइट? या शिवाजी कॉलेज मिला था शिवाजी उस टाइम. कॉलेज मिल रहा था। अब अगेन वो डी को या कॉलेज है, अगेन टीयर 2 कॉलेज है। बट एक जो सनक होती है ना कि मुझे तो वही चाहिए, तो उसके लिए कभी कभी कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। दैट्स ग्रेट भाई, दैट्स ग्रेट, तूने पूरा प्रोसेस बताया कि हाँ हमने ये किया एंड ऑल दैट। तो ये तो हो गया बाहर की चीजें, पेरेंट्स, रिलेटिव, सोसाइटी, उनको कैसे कन्विंस करना एंड ऑल। या बट जब ये सब चीजें आती है ना, तो अपने माइंड पे एक बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रेशर बिल्डअप होता है। एंड एक खतरनाक सा सेल्फ डाउट का घंटा लटकता है कि भाई व्हाट इफ, मतलब 1 साल देने के बाद भी। एंड मतलब अगेन आई बिलीव कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लक, चाहे वो 1% मैटर करता हो। देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो 1% मैटर करते हो, बट देयर आर। तो वो व्हाट इफ का जो घंटा लटकता है कि भाई अगर ये सब कुछ करने के बाद भी ना हुआ, तो प्लान बी क्या है? था कुछ ऐसा मन में प्लान बी, या मतलब जब वो आता था वो कि हाँ ना हुआ, तो हाउ डिड यू मैनेज टू कन्विंस योरसेल्फ, हाउ डिड यू मैनेज टू हैंडल योरसेल्फ? So one benefit of not having any college is that you'll get something if you take the exam, especially if you're writing UJAT. So for me, backup options used to be कि हाँ ठीक है सुखदेव नहीं मिला तो नीचे के कॉलेजेस ले लूंगा. बट या इट यूज्ड टू हॉन्ट मी कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, स्टिल वो कॉलेज मुझे नहीं मिले. सो माय लाइफ इज गोना बी मिजरेबल एंड ऑल. सो इट ऑल यूज्ड टू बी देयर. बट आई थिंक अगर सेल्फ डाउट हो रहा है हम्म। आपको खुद पे, सो यू डोंट नीड टू जस्ट फ्लो विद इमोशंस. मतलब इमोशंस के साथ मत बहो, और मतलब थोड़ा लॉजिकली सोचो, एनालाइज करो कि एग्जाम में आता क्या है एंड व्हाट आर यू केपेबल ऑफ, व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट. ऐसे नहीं होगा कि यू आर जस्ट टेलिंग योरसेल्फ कि हाँ मैं कर लूंगा कर लूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ मुझे करना है मैं तो कैसे भी कर लूंगा. सपोज इफ यूर क्लास 8 9 में तुमने मैथ्स नहीं पढ़ी है तो तुम 12 में नहीं पढ़ पाओगे. इट्स अ फैक्ट. गॉट इट भाई, गॉट So इट। you need to analyze कि पेपर में आता क्या है. What I did is I knew कि logical reasoning easy आती है ड्यू चैट में, and मैंने पहले भी कर रखा है. So that was a plus point. English again I was good at that, and I also like I told you इन तीनों की preparation कर रखी थी. So I हम्म। kind of thought कि हाँ इनमें तो मैं कर लूंगा. GK again I thought I know how to prepare for it because it will be a new exam, new season, so I'll have to do it again. But I know how to prepare. So I convinced myself. For maths, it was really challenging because my class 12 score is just around 60-70 in mathematics. ओके। So it was a very, it was a challenging decision that this exam has 40% mathematics, that too higher हम्म। maths, and I am taking a drop here. My maths already is weak.
So yeah, challenges were there, but then you have to, you know, get into the book. You have to read stuff and you have to figure out कि हाँ तुमसे होगा नहीं. So in the very initial phase, like जब drop start किया था मैंने maths पढ़ना start किया था उस time पे, और कुछ नहीं पढ़ता था, मैं maths पढ़ता था. I used to take help from my friends जिन्होंने already JEE जैसे exams clear कर रखे हैं, from my you know, some people in my family who are teachers. So for 1 or 2 months it was like a diagnostic phase कि हाँ I am diagnosing myself if I am capable of this or not. Then I realized कि हाँ I can at least do 50% of it. That was the moment I thought, yeah, I'm going to give the next 6 months to this preparation. That's when my self-doubt started decreasing. When I realized I can study. For example, there's a imagine a student Shyam. He's from Hindi medium, and you Okay. tell him to clear the English section of CAT exam. He won't be able to do that He in won't one be. day. He'll self-doubt himself, but he can do it over 1 year, right? So you need to Yes. logically go about what's in the exam and what you are capable of, then decide if you are actually the suitable candidate for a drop year or not. So that's it from परफेक्ट भाई, according to me. बहुत बहुत प्यारा आंसर दिया तूने. इफ आई हैव टू सम इट अप शॉर्ट, इमोशंस में मत भाओ. इमोशंस दोनों तरह के होते हैं, चाहे मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर ही दूंगा, उस इमोशन में भी एक्सट्रीम मत जाओ. मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, उसमें भी एक्सट्रीम मत जाओ. पॉन्डर अपॉन इट, बैठो, सोचो, दिमाग लगाओ, चीजें एनालाइज करो, गाइडेंस लो. यूट्यूब पे बहुत सामान पड़ा है, समझो पेपर कैसा आता है, क्या पैटर्न है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स. देखो, नजर मारो, आइडिया लो कि क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट थिंग्स आर इजी फॉर मी एंड क्या क्या मुझे तंग करेगा, एंड ऑल दैट एनालाइज करो. हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर हेड कि होने क्या वाला है, एंड स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल जब तुम प्रोसीड करते हो, तुम्हारे लिए चीजें क्लियर होंगी, एंड यू नो कि Yeah, भाई मैं and कर लूंगा. हाँ, और one वो more एक. thing I would like to हाँ हाँ, add. बता भाई. Yeah, one more thing I'd like to add is most people are scared of mock tests. I हम्म. have a different opinion. I would say one thing, in the very starting phase of your preparation, just take a mock test and realize how much you are actually capable of at that point of time. Even if you're able to do 50 questions, tell yourself that yes, I can do 50. 100 questions, I can do 50. Yeah, this is my self-worth. I have to just go 30 questions more. That helps. So do that. बहुत Don't be भाई, scared. एग्जैक्टली Many एग्जैक्टली. students get scared, but it's my different opinion on this one. ये अपना ओपिनियन थोड़ा मिलता है, पता है लोग डरते क्यों हैं? लोग डरते हैं अपनी एक्चुअल इमेज को देखने से कि वेयर आई स्टैंड. अगर मुझे पता लग गया कि Yeah. मैं बहुत नीचे स्टैंड करता हूँ तो मुझे डर लगेगा. बट दैट आल्सो हैज अ फ्लिप साइड कि अगर मुझे पता लग गया मैं बहुत नीचे स्टैंड करता हूँ तो इट माइट हिट माई ईगो, और मैं तो करके दिखाऊंगा फिर. ठीक है, आई पुश माई सेल्फ, आई एक्सर्ट ऑन इट मोर, एंड मैं बहुत एफर्ट करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा. ये दोनों साइड्स हैं इसकी. बट अगेन, खुद के बारे में पता होना इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग यू कैन डू, यू शुड डू इनफैक्ट. और ये चीज मैं बहुत Yeah. अच्छे से एग्री करता हूँ भाई. तुमने स्टार्ट किया, मिड वे एंड में आके जितने हो सके मॉक टेस्ट दो, जितना हो सके सेल्फ एनालिसिस रन करो. आइदर तुम एक टॉपर हो. मेरे 12th बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट मैंने ऐसे बहुत से टेस्ट दिए हैं वेयर आई जस्ट मेस्ड इट अप रियल बैड. बहुत बुरा मेसअप किया, पर वहां मेसअप किया तभी मेन एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए. तो मॉक्स देने से, टेस्ट देने से, सेल्फ चेक करने से घबराओ मत. तुम्हें खुद की इमेज पता लगेगी, बट दैट्स व्हाट बेनिफिशियल फॉर यू. राइट भाई? Yeah, exactly. That's what I'm saying. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. Just tell yourself who you are over the time. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो तो यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव. बट वेन यू नो कि मैं Yeah, यहाँ स्टैंड करता exactly. हूँ, चाहे वो टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो, पर तुम्हें अपनी एक्चुअल इमेज पता है, तुम इम्प्रूव भी करोगे, तुम रिटेन भी करोगे, तुम सब कुछ करोगे. खुद के बारे में पता होना सबसे पहले Yeah, जरूरी exactly. है. And राइट one भाई more भाई. thing is that don't compare yourself with others. Compare yourself एग्जैक्टली with your एग्जैक्टली past एग्जैक्टली. score first. Then compare with others. Yeah. इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं. जब तुम स्टार्ट कर रहे हो, जब तुम मिड वे हो, ये मत देखो वो कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि एवरीबडी हैज हिज और हर ओन स्पीड. बहुत से टीचर्स Yeah. होते हैं जो 6 महीने में सिलेबस करवा देते हैं, बहुत से टीचर होते हैं 10 महीने में करवाते हैं. बट जब वो 6 महीने वाले रिवीजन पे आते हैं तो दे टेक मोर टाइम. लेकिन वो 10 महीने वाले ऐसे होते हैं कि उनको रिवीजन चाहिए ही नहीं. एवरीबडी हैज देयर ओन स्पीड, एंड ये मैटर नहीं करता कि हाफ वे आके कौन आ गया, ये मैटर करता है फुल फिनिश लाइन तक पहुंच के कौन कितना अच्छा कर पा रहा है. तो खुद को Exactly. टाइम दो, डोंट रश अप, खुद को टाइम Yeah. दो. एंड एक बार तो खुद में लगे रहो कि मेरा कल ये था, आज ये, कल ये होना चाहिए, परसों ये था, आज ये, परसों ये होना चाहिए. एंड आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू फील लाइक कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, अब अपने आसपास देखो, अपने कंपटीशन पे देखो, पैन इंडिया लेवल कंपटीशन पे देखो, तुम्हारे जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां भी तुम्हारी कोचिंग वगैरह चल रही है वहां देखो, एंड तब जाके कंपेयर करो. राइट? Yeah. ओके, कूल. तो भाई हमारा फर्स्ट हाफ तो कंप्लीट हो गया. ड्रॉप लेना और ड्रॉप लेने से पहले की सारी कंफ्यूजन्स की, लाइक होगा क्या, कैसे होगा, Yeah, सेल्फ डाउट exactly. एंड ऑल, पेरेंट्स, सोसाइटी एंड एवरीथिंग, हमने सब कुछ कवर कर लिया. बट नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि मैं ड्रॉप लूंगा, मैं अपने ड्रीम कॉलेज के लिए, मैं अपने एम के लिए ड्रॉप लूंगा, एंड आई एम सो श्योर ऑफ दैट. उसके बाद
हाउ डिड यू गो ऑन प्लानिंग थिंग्स? लाइक तूने बेसिक ब्रीफ अप तो कर दिया, बट भाई मंथ बताएगा थोड़ा सा, एग्जैक्ट नहीं, एस्टिमेट मंथ क्या था तूने ये सारा डिसीजन लिया एंड तूने नई तरीके से पढ़ाई स्टार्ट की? हाँ एग्जैक्ट मुझे याद है, सितंबर में ड्यू जैट 2020 हुआ था. सो ओके आई थिंक इन नवंबर आई डिसाइडेड दैट यस इट्स गोना बी अ ड्रॉप, because that's the month the results came out, the college allotment happened. So from राइट November राइट to राइट next year's, I think October or August. The exam was in October or August. So I ओके started in November, and it went about 10 months. Yeah, 10 ओके months of preparation. Yeah, कूल कूल. but तो out हाँ of बता those, बता. yeah, yeah, out of those 10 months, only 6 7 were utilized for the preparation. Like at the end, last phase may 3 4 months it was all mock test, because I had covered everything before in 6 months. Yeah. राइट राइट राइट. तो मुझे एक चीज बता, when you knew कि you had 10 months in front of you, मेरे सामने 10 महीने हैं और Yeah. मेरे सामने ये कॉलेज है और ये सिलेबस है, तो फर्स्ट चॉइस एक बच्चे के मन में आती है कि मैं खुद तैयारी करूं या मैं कोचिंग लूं. एंड व्हेन यू डिसाइड टू गो फॉर कोचिंग, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग लूं या ऑफलाइन कोचिंग लूं, इस पे तेरा क्या ओपिनियन है? व्हाट डिड यू चूज एंड व्हाई? Okay, so I'll try to answer this question from first a personal perspective, then from a ओके general perspective. ओके ओके. Okay, so जहाँ तक online offline की बात है, I've always preferred online, because because of the fact that it's more convenient. In offline you have to travel, you get tired, and at the end you learn the same things in an offline environment. The only difference is you go between students and you feel the pressure, you feel the competition. That helps for some students. राइट So online versus offline should totally be your decision. If you are someone just starting off with preparation, so try online for some time. Start your preparation online. Stick yourself to some good playlist and start learning a chapter. If it doesn't work for you, try some offline coaching and figure out what works for you. Next, राइट राइट. when it comes to coaching or self study, it's all about how self motivated you are and how self disciplined you have been. What is your past record in discipline, right? If you are able to realize your discipline, you are someone who is waking up every day and sitting for study at 9 a.m. in the morning after taking a bath and having breakfast, you should continue this unless and until you're finding good resources on the internet. If you're not someone who wants to waste time in finding resources, trying out different playlists, and then finalizing one, if you're not someone who will do all this, so just go for a coaching, right? राइट If you don't want to waste time on these, if you want to stick to a schedule without being self-disciplined. So राइट for most students, I think the coaching works. And yes, you should go for a coaching. You should figure out what is the most convenient one for you. For deciding that, figure out whether you like live classes or recording, and then analyze which coaching provides which one in what portion. Okay. राइट राइट So राइट. that's it from my side about the coaching. I personally prefer online mode, and I personally prefer recordings so that I can watch them even at 2 a.m. in the night. परफेक्ट भाई, दैट्स टोटली योर ओन कॉल. मतलब तेरी भी अपनी कॉल है, और जो बच्चा देख रहा है जिसको डिसाइड करना है, तुम्हारी भी अपनी कॉल है, तुम्हें खुद के लिए डिसाइड करना है. Yeah. बिकॉज एज आई ऑलवेज से, हर बंदा अलग है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. एंड बहुत से बच्चे होते हैं जो जिनको एक एक्सटर्नल डंडा चाहिए कि भाई पढ़ने बैठ, आज का ये तेरा काम है, आज ये कर, कल का ये Yeah, तेरा काम है, कल exactly. ये कर, फिर टेस्ट है. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पेस पे चलते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने आप का सारा सीन देख पाते हैं, संभाल पाते हैं. तो अगर तुम्हारे लिए वो काम करता है, दैट्स परफेक्ट. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कोचिंग लेने वाले बच्चे वीक होते हैं और सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे स्ट्रांग होते हैं, या वो मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड है. ऐसा कुछ नहीं है. डोंट फॉल इन दैट मिथ. और अगर तुम कोचिंग भी ले रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, तुम नहीं भी ले रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, बट इट्स जस्ट दैट खुद को फिगर आउट करो. भाई तूने कोचिंग नहीं ली, राइट? Yeah. तो हाउ डिड यू गो ऑन, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली बात चल रही है कि तूने कोचिंग नहीं Yeah, ली, yeah. हाउ डिड Actually, यू I would वेंट like ऑन to विद add योर. one more point. अच्छा One more अच्छा, बता point to बता. the last one. Like, ओके see, अगर आप coaching ले रहे हो या फिर आप coaching नहीं ले रहे हो, one thing is going to be similar. Someone will teach you on your screen, may it be on YouTube or on the coaching's portal. Someone is ओके. going to teach. You'll have to note things down and you have to study on your own. You'll have to, ऑन योर. answer questions on your own. So it's not much difference. Yeah, at the end, you study for yourself. You'll have to study. No one is going to spoon feed you everything, because these are entrance exams, not your class 10 board exams that everything Got will it, be got it, factual. got it. Exactly, So exactly. coaching or not, it's gonna be more or less same at the end, right? Okay, sure. Please continue with the next question. ओके, सो आई वाज आस्किंग कि भाई तूने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद पढ़ूंगा, राइट? अब तेरे पास जो तूने, मतलब पहले एक बच्चे की अप्रोच होती है कि मैं थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा कर लूं, बीट इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, Yeah. बीट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स, या कुछ भी हो, कैसे भी हो. हाउ डिड यू प्लान ऑन टू गो इन विद एवरीथिंग? या तेरे को कहाँ कहाँ सामान मिला, या तूने स्टार्ट कहाँ से किया, एंड तेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा इस बारे में, सम इट अप.
Okay, sure. The first thing is, categorize what kind of material you need. Okay, you need video lectures, first thing. You need textual material about your subject. Then you need questions, right? Questions can be online, offline. I'm putting them into one category. Okay. So on the questions part, I would say there's a lot available on the internet for free, right? Right. There's a lot. You can easily find it. You can take past year papers of any exam. UJAT has its past 10-year papers on the internet. You pick past year papers of any other exam. You can practice that because aptitude subjects like quants, LR, verbal, they are almost same across the exams. So on the questions part, there's not going to be much problem. Just get past year papers. If you have some friends in other institutes, like I would not personally suggest it because it's actually unethical. But still, if you have some friend, you can take some help because it's natural. We're human beings, so yeah, you can get help from there. Secondly, when it comes to video lectures and or maybe any kind of video material, so you'll have to do some hard work to figure out what works for you. You can go to YouTube, you can find hundreds of playlists about the same chapter, but it's seriously going to take time to figure out what works for you. And it's not like कि तुम्हें एक playlist मिल गई, एक teacher मिल गया, so you'll study everything. For example, तुम्हें arithmetic एक teacher से अच्छे से समझ में आ रही है, तो जरूरी नहीं कि algebra भी वो पढ़ाए तो तुम्हें same उतनी efficiency से समझ में आए. So it's a tough job actually. It's a very tough job if you go out to find video material. YouTube is the only place you can go, and it's a tough job. If you want to avoid it, I would personally suggest go for a coaching, right? Then when it comes to textual material about your preparation, you can easily find good textbooks like publication with from publications like Arihant or Arun Sharma. His Cat Wants book is very good. Personally, verbal book is not that good in my personal opinion, right? Otherwise, for textual material as well, there's a lot available on the internet. Even if you find search for a chapter, you'll get many blogs about that chapter, so you can note down formulas from the screen. So yeah, video part is difficult. Other two are convenient after you have a good practice at how to find good material, right? Okay. Yeah. Perfect, bhai. You summed it up really well. वीडियो लेक्चर्स की बात होगी, टेक्सचुअल मटेरियल की बात होगी, दैट्स ग्रेट. अब मुझे एक छोटी सी चीज, थोड़ी सी पर्सनल बात जाएगी, बट इफ दैट हैज हैपेंड कि तूने स्टार्ट किया, तूने ड्रॉप लिया, सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, आफ्टर 5 months 6 months लाइक 10 month की जर्नी में 4 5 6 7 कहीं पे भी आके वो जो ग्राफ ऐसे जा रहा था उसमें एक डिप आया, थोड़ा सा डिप आया, एंड दैट इज समटाइम्स रियली नेसेसरी फॉर यू टू कीप गोइंग. बट उस डिप में अगर आप खुद को ना संभाल पाओ एंड आप खुद को हैंडल ना कर पाओ और आप नीचे, वो डिप और डीप होने में टाइम नहीं लेता, राइट? तो ऐसा तेरे साथ कुछ हुआ कि सम इंसिडेंट या सम टेस्ट या सम टॉपिक या एनीथिंग that made you doubt upon your decision of taking a drop, that made you feel like कि मैंने बहुत time waste कर दिया? Any such thing that has happened? Yeah, it surely has happened once. And if you're a drop year student or even if you're a regular aspirant, it's going to happen. It's natural, it's normal. You have to recover from it. It may last for a month, for a few weeks. It's going to happen. For me, I would tell you, it was around March and April. So as I told you, in maths, I was not good since the starting. I studied mathematics up to a point. I thought that, okay, this is going to be enough. I'm taking mock tests, one mock, second mock. Like in the previous time, I was also taking mocks. Say I was scoring 220, 240. Now I know more, so I'm scoring 260, 270. That was the point. I was not able to cross that mark of 260, 70. Right? I was just not able to cross it because I hadn't covered mathematics completely. Just 50, 55%. I was comfortable. I just used to think कि मैं 85 attempt करके 85 सही कर लूँगा, which is not a practical thing. Yeah. Right. So that was the point. I started feeling frustrated. 260, 270. I don't have a very high 12 score. So I'm again gonna get colleges like the last time. The second year colleges, the not so good colleges. That was the point. I felt कि oh यार, why did I take this drop here? मुझसे तो maths 55% से ऊपर होनी नहीं है syllabus complete. That was that point. But yeah, उस time पे ऐसा लगता था कि ये चीज तो मैंने कभी life में पढ़ी नहीं है, मुझे समझ नहीं आएगा. Like from the starting, my algebra is very poor. So, but I had to push myself. Exactly, exactly. And that's how you get out of that phase, and your score then again goes up. So yeah, that's it from me. कुछ चीजों के लिए खुद को पुश करना पड़ता है, even if you don't want to. And उनमें मैंने नोटिस किया है कि एक मान ले सर्कल है,
उस सर्कल की एंट्री के लिए पुश करना है बस। इनिशियली जब तेरे से मैथ्स नहीं हो रही यू विल प्रोक्रास्टिनेट इट एवरी सिंगल डे, एंड बस एक दिन तूने खुद को धक्का करके स्टार्ट कर लिया ना, बस एक पूरा दिन दे दिया, तो Yeah, सेकंड डे से exactly. इट विल नॉट बी दैट टफ। Yeah, exactly. In everyone's preparation एक सेक्शन ऐसा होता है, एक चीज ऐसी होती है ना जो आप एकदम कर ही नहीं पाओगे उसे। राइट Like राइट राइट, even होता है today, होता I suffer in mathematics, I suffer in algebra, I generally suffer. But yeah, at that point, थोड़ा सा aptitude और ऊपर कर लिया था मैंने. अभी now it's again normal, back to normal. So yeah, for the preparation, you have to do things that you're not capable of. राइट, परफेक्ट। नाउ Yeah. विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन, मॉक्स। जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मॉक्स सारा साल जरूरी है, स्टार्टिंग में भी, मिड में भी और एंड में तो स्पेशली। तेरा मॉक्स पे जो भी ओपिनियन है कि देने चाहिए, ऑब्वियसली वो तो मेरे को पता ही होगा, देने चाहिए, क्यों Yeah. देने चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे खुद को इंप्रूव करना चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट टू से ऑन मॉक्स, बता दो। Okay, sure. So as I told, मेरे preparation का पूरा time was about 10 months. Yeah, and I completed my preparation in 5-6 months. So 4 to 5 months, all that I have is mocks. Yeah, राइट all that I did was mocks and past year papers. So on mocks, the first and foremost thing is keep taking mocks. Okay, don't just let the flow break. Even अगर तुमने 50% complete किया syllabus, just take the mock because it's not very certain कि तुम 50% ही score करोगे अगर syllabus तुमने 50% किया, because there is varying weightages of sections, there are easy questions, हाँ. So just start taking mocks once you're at about 50% of preparation. Second thing is, if you are from a coaching institute, take the mocks that they are providing, but don't be afraid to take mocks of other institutes because it always helps. What I realized from my, frankly speaking, I took more than 40 mock tests for the DUJAT itself ग्रेट only, भाई, right? ग्रेट। And the coaching institutes I tried were Prince Academy, of course. Then there are 2-3 other names as well, the big players. So I tried mock tests of all. Everyone had something different to offer, some unique element. Yeah, Prince Academy personally, I found the mocks very close to the actual paper. Like the questions were slightly easier. Other institutes, they set papers slightly tougher. But I found Prince Academy more relevant because they were close to the exam, and exam has been moderate. So yeah, on mocks, I would say just try out different institutes. That's the first thing. The second thing is analysis is very important. But most people don't know how to analyze. They just think analysis is something like Excel sheets and graphs and all. That's not the proper analysis. Right. Analysis is actually figuring out what you were capable of and what you couldn't do. Yeah. So suppose in every mock test you will find that कि तुमसे 10-12 क्वेश्चन तो होने ही नहीं थे, तुम्हारे थे ही. Out of the 88 questions remaining, if you attempt 70, you tell yourself कि मेरा स्कोर काफी पुअर है. In other paper you attempt 80, you tell कि अभी भी पुअर है, but that's actually improvement. You should note down कि हाँ, you improved. You shouldn't think कि तुम still 85 plus नहीं कर पा रहे हो. You should appreciate your improvements. Second thing कि हाँ, Excel sheet बनानी है बनाओ, but don't make it too technical. Just note down your scores. Just see कि पहले average क्या था तुम्हारे scores का, अब क्या average है. Just see कि exam के last time में क्या तुम्हारा आ रहा है. And going section wise, I will tell कि maths में हमेशा कुछ नई चीजें आएंगी जो तुमने पढ़ी नहीं होंगी, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस, उनको नोट करो. मैं बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा, उनको नोट करो बिकॉज वो आ सकती है पेपर में. हर चीज तुम बुक से नहीं पढ़ पाओगे. फॉर रीजनिंग आई वुड अगेन से कि तुम्हें कुछ यूनिक टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस, उनको जरूर नोट करो. क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, कहीं पे एंड का यूज है, कहीं पे शैल का यूज है और आंसर कुछ है, तो तुम वो चीजें नोट करो. रीजनिंग में भी, वर्बल में आई वुड से कि सारे वर्ड्स नोट करके याद करो, सारे इडियम्स याद करो, सारे फ्रेजेस जो भी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं उनको याद करो. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. जस्ट नोट देम डाउन नॉर्मली. जैसे तुम्हारी वोकैबुलरी की नोटबुक होगी उसमें नोट करो और उनको याद करो. जीके अगेन, for GK I have a different opinion. So most people think कि GK is like तुमने ये बुक पढ़ी, you go to the test, अगर तुमने 100% पढ़ी है, यहाँ पे तुम्हारा 80% आना चाहिए. Now I'll tell you the fact. If this has 1000 pointers, this 10 questions in the mock might be totally out of it because it's an entrance test. There's nothing fixed. Yes, right. So rather than treating it like कि तुमने ये पढ़ा तुमसे ये नहीं हुआ, you're a loser, treat it like you have 1010 questions to study. Just combine them. Right. Because in mocks it's always going to be new. It's not going to be same. So for GK again, treat it like you are studying. You're not taking a test. Just note down everything. Use mocks. Mocks have important questions. Treat those questions well. Respect them. So that's it from my side for the mocks. Great, bhai. It's also a learning tool. Yeah. Right. एंड एक एक्सेल शीट वाली बात बोलना चाहूंगा. तुम्हें एक्सेल शीट बनानी है बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ, कॉपी पे नोट डाउन करो, बट एट द एंड यू नीड टू नो कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, कौन कौन से टॉपिक्स वीक थे, एंड उनको मैंने ओवर द टाइम कैसे इंप्रूव किया.
यू नीड टू गिव ड्यू क्रेडिट टू योरसेल्फ। जितना तुम खुद को अप्रिशिएट करते हो ना, उतना वो एक नेसेसरी Yeah. वैलिडेशन मिलती है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें खुद से ही Yeah, चाहिए। exactly. खुद को वैलिडेट Yeah. करना शुरू करो, इवन इफ यू आर इम्प्रूविंग, इतना सा करना शुरू करो। Yeah. दैट्स ग्रेट भाई, थैंक यू सो मच आयुष फॉर जॉइनिंग इन, एंड आई होप सो तुम्हें बहुत मजा आया होगा। जिसने भी देखा यहाँ तक, तुम्हें बहुत मजा आया होगा। तो सबसे पहले तो चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक। आयुष भाई का इंस्टाग्राम नीचे ड्रॉप कर दूंगा, अगर तुम चाहो तो जाके फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत मजा आया, Yeah, तुझे बहुत thank you, मजा आया, bro. एंड इन सबको भी I बहुत मजा also आया। liked it a lot to share my preparation journey. You know, after 2 years of the exam, बिल्कुल it भाई, feels good to बिल्कुल। share the journey. Yeah. बहुत Yeah. बहुत मजेदार चीज होती है व्हेन somebody is asking and I hope somebody it is helps the looking up to you aspirants a lot. कि तूने ड्रॉप Yeah. लिया एंड यू मेड इट। तो दैट इज समथिंग स्टूडेंट्स एडमायर। बहुत बढ़िया बात है भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड एक लास्ट चीज, केडी कैप्टन का कोर्स आने वाला है कुछ दिनों में। सो इफ यू विश टू कंसिडर कोचिंग फॉर योर ड्रॉप ईयर, इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड या भाई दैट्स इट। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला। थैंक यू सो मच।